साल 2020। अब तक 19 से 20 का डिफरेंस समझ आ चुका था। फॉर्मल पैंट देखे हुए 9 महीने हो गए थे और पहाड़ देखे हुए 12। वर्क फ्रॉम होम की फ्रस्ट्रेशन में, बीवी की लेट्स सेव मनी के लॉजिक को भुलाते हुए और मिडिल क्लास के कट्टर ऑप्टिमिस्टिक नेचर से इंस्पायर होते हुए मैंने मंगा लिया राइनॉक्स का सैडल बैग कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों ट्रिप पे तो हम जाएंगे ही। तो अब आप लोग ये लोगो रिवील देखो और मैं स्टार्ट करता हूं ये रिव्यू। ओवरऑल क्वालिटी, सेमी हार्ड शेल से बने हुए हैं ये बैग्स। दिस विल कीप इट फ्रॉम सैगिंग ऑन लॉन्ग राइड्स। वेलक्रो एंड जिपर्स आर वेल असेंबल्ड टू। ऐसा लगता है कि इट कैन टेक सम बीटिंग, जिसका इन डेप्थ अपडेट आने वाले ट्रिपिंग वीडियोस में मैं ज़रूर दूंगा। हाउ मच कैन इट कैरी? ये सब इस बैग से निकला है, विच मीन्स इट कैन टेक एटलीस्ट अ वीक के ट्रिप का सामान फॉर अ कपल, and if done optimally, one can add a day or two more. Comfort for the pillion. थोड़ा adjustment ज़रूरी है, but I did get a thumbs up from pillion rider. There is space for foot to rest easily too. So all in all, there is enough space if you mount it properly. Can you lean? Yes, you can lean, but don't be mean. Knee touching की आशा मत करना. With the saddlebags attached on the saddle stays, they stay planted in the hardest of conditions, but you still have to keep it in check. Is it 650 twin compatible? बहुत कम saddle bags हैं जो इन बाइक्स पे चल सकते हैं, and these are designed to do just that. बिल्कुल राम लक्ष्मण की जोड़ी समझो. If these work with the angular silencers that are on this bike, they will work with most of the bikes out there. So go all out and try. Value for money. The price is just right, and they are a homegrown product, which makes it even better. The quality is achieved through good quality raw materials like YKK zippers and 3M reflective tapes and the likes. Ease of use. While shooting this review, I realized the ease of having saddlebags. I remember the days when we both had to get up an hour earlier to mount the luggage and then start the day's ride. But now, it's more like mount and ride on. Verdict. After riding about 200 kilometers with these bags, I realized how well it has been thought through. There was space for extra luggage for those random shopping sprees. And the angular shape of the bags fitted our bike perfectly well. The inner lining was in bright color to find smaller items. Moreover, the bottle holder was at an approachable reach. Because of this, I believe this product will become a trusted companion for rides to come. But until then, I request you all to like, share, subscribe this channel, and do let us know what you think about the videos. You may ask questions about the product in the comment section below. Thank you, and we'll see you in the next one.